welcome to all of you to my channel. Today our topic of discussion is, most recently you must have been hearing in the news, Russia-Ukraine crisis. As we all know today, that war is going on between Russia and Ukraine, and it has created a lot of challenges for everyone across the world. It is really sad that even in 21st century, where we are seeing a war occurring between two nations. So today we'll be analyzing the causes behind this crisis. So before starting, I request all of the viewers to check out our previous videos of newspaper analysis. I assure you all that you will definitely learn how to interlink current with the basics and apply those knowledge that you learn across all the general studies paper, and also develop broader understanding of the topic. Okay, so now let's come back to our topic, Ukraine crisis. So we will be analyzing this topic from four contexts. First of all, Ukraine-Russia war that is occurring. So we'll have a look at the locations of the Ukraine. Then geopolitical implications, Cold War 2.0, that some are predicting that we are moving towards Cold War 2.0. Then also rising Russia-China axis, and they are trying to create new global order. Then lastly, we'll see how Indian government is responding to this situation, and also what are the implications on Indian economically, politically, society-wise, security-wise due to this crisis. So this would be our analysis of the today's discussion. Okay, so let's first have a look at the location. If you see, Ukraine shares land boundary with Russia and also maritime boundary with Russia. So Ukraine has been formally been part of the Russia before 1990. So it was part of the USSR. Post 1990, Ukraine was moved out of Russia as there was a disintegration of USSR. So first, so let's see. See, these green colored marked countries are basically NATO members. Okay, so if we observe, all the NATO members countries are sharing boundary with Ukraine, and Ukraine is acting as a buffer between Russia and these NATO member countries. NATO uh, these NATO members, these are nothing. This is a US and European nations, mainly West European nations led military bloc, and their objective is collective security. That if any nation faces threat from any other nation who is not member of the NATO, basically non-NATO members, so in such situations, all NATO members will come in support of the NATO members who has been attacked by non-NATO members. So this is the main objective of NATO members. So in response to NATO members, NATO countries, Russia had before 1990, when it was USSR, it had initiated Warsaw Pact. So many such nations, Ukraine, Belarus, even Slovakia, Hungary, they were members of the Warsaw Pact. But post disintegration of USSR, what happened? These countries were nowhere under influence of Russia, so they came under the influence of West, and they slowly they became the members of NATO. So earlier NATO members in 1990 they were just 16 members, but now today members have increased to 30. So जो न्यू मेंबर्स है वो मेनली कहाँ से आए हैं? वो जो यूएसएसआर के फॉर्मर इन्फ्लुएंस में थे, फॉर्मली इन्फ्लुएंस में थे. So now this is creating fear in case of Russia, because now NATO members are trying to encroach Ukraine. So ये क्या है? तो बेलारूस रशिया का फ्रेंड है. यूक्रेन अभी वैक्सीनेट कर रहा है इसकी पोजीशन कि नाटो मेंबर बनना है नहीं बनना, तो इस पे प्रेशर डालने के रशिया ने वॉर किया. तो उसी पे और प्रेशर डालने के लिए जो रशिया का ईस्टर्न पार्ट में है जो रीजन, डॉनबास रीजन, यहाँ पे रशिया ने सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी. और ऐसी 2014 में ये यूक्रेन का पार्ट था, क्रीमिया रीजन, ये एक्वायर कर लिया था. सो फर्स्ट हैव अ लुक एट दिस लोकेशन. Okay. So now let's analyze. First of all, let's discuss the background of the situation in detail. Okay.
तो बेसिकली बिफोर 1990 यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ द यूएसएसआर, जैसे मैंने पहले बोला था। तो 1991 में क्या हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो मेनी नेशंस ऑफ जो फॉर्मली यूएसएसआर के पार्ट थे उनमें क्या हुआ, रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम बेसिकली वोट्स कंडक्टेड बाय द पीपल एंड पीपल डिसाइडेड टू make Ukraine as an independent nation, not as part of Russia. So Ukraine voted to leave USSR. So धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे सारी कंट्रीज यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस से वो दूर जाती रही, और साथ साथ क्या हुआ, दे स्टार्टेड कमिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट। सो एक ये इशू था, पर रशिया को अच्छा नहीं लग रहा था। रशिया अपनी डोमिनेंस फिर से चाहता था, बिकॉज 1990 ऑनवर्ड्स हमारा जो यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ हम मूव करते ग्लोबल ऑर्डर, तो यूएस की डोमिनेंस थी, तो रशिया का डोमिनेंस खत्म हो रहा था। सो व्हाट हैपेंड इन 2014 देयर वाज एन इवेंट यूरो मैदान क्राइसिस। तो उसमें मेनली क्या हुआ, देयर वाज प्रोटेस्ट्स इन यूक्रेन एंड दे वर डिमांडिंग कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बने। एक तो दो ग्रुपिंग्स याद रखने आपने, एक तो नाटो मिलिट्री ब्लॉक था, सिमिलरली यूरोपियन यूनियन ग्रुप, ये क्या, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रुपिंग। तो देवर प्रोटेस्ट, यूरो मैदान क्राइसिस था, जहां पे यूक्रेनियन पीपल वर डिमांडिंग कि यूक्रेन ईयू का पार्ट बने, ताकि दे कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो ये एक रीजन था। पर एंड दे वर अगेंस्ट ईयू क्या है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ये रशिया लेड है, और ईयू क्या है, दिस इज लेड बाय वेस्ट यूरोपियन नेशंस। तो इनके बीच में टसल चल रहा है। इकोनॉमिकली दे वांट यूक्रेन टू ज्वाइन ईयू एंड मिलिटरीली दे वांट यूक्रेन टू ज्वाइन नाटो। तो ये रशिया को पसंद नहीं आया था ये चीज, कि रशिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा था। सो व्हाट रशिया डिड, रशिया ने क्रीमिया में रेफरेंडम कंडक्ट किया एंड रेफरेंडम रूट से क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, and they all voted in the favor of Russia. So this became the context of acquiring this region, Crimea region. And also और रीजन क्या था रशिया का इसको एक्वायर करने का, देखो रशिया जो है, अगर हम देखें, if we observe this part is Russia, right? तो रशिया का जो ये वाला पार्ट है, ये सॉरी पोलर पार्ट है, तो यहाँ पे फ्रोजन एरिया, तो रशिया इस रीजन को यूज नहीं कर सकता। तो रशिया के जो, अगर उसे ट्रेड कंडक्ट करना है इकोनॉमिकली, तो उसके पास जो ऑप्शन बचता है सिर्फ ये वाला रीजन, ब्लैक सी वाला रीजन। तो क्रीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया, बिकॉज यहाँ पे एक फेमस पोर्ट है सेवेस्टोपोल पोर्ट, वो क्या वार्म वाटर पोर्ट। तो थ्रू आउट द ईयर 12 months ये पोर्ट अवेलेबल रहता है, सो इट बिकम्स इजियर टू कंडक्ट ट्रेड अक्रॉस दिस पोर्ट, बिकॉज बाकी जो पोर्ट्स है वो समर टाइम में ओपन अप होते हैं, पर विंटर टाइम में क्लोज रहते हैं। सो दिस वाज तो रशिया ने रेफरेंडम कंडक्ट किया एंड थ्रू द रेफरेंडम एज एक्सक्यूज यूज करके क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। ओके, एंड ऑल्सो एक और रीजन क्या था, ब्लैक सी है, बिकॉज सी रीजन है, तो रिसोर्सेज होंगे, ऑयल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, इवन अदर फिशिंग रिसोर्सेज, तो उससे भी रशिया की इकोनॉमी को फायदा होना था। तो ये रीजन से, ऑल्दो रीजन जियोपॉलिटिकली यूज किया था रेफरेंडम, पर एक्चुअल मेन इंटेंशन क्या था रशिया का, टू गेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सो जब एनेक्सेशन ऑफ रशिया हुआ, सो व्हाट हैपेंड, देयर वाज sanctions against the Western nations had imposed economic sanctions on Russia, and also Russia was removed from the G8 grouping. तो G8 से G7 grouping बन गई थी, तो Russia was removed. Further अगर हम देखें, there were separatist movement in eastern Ukraine. तो रशिया बेसिकली सैंक्शंस हुए एंड यूक्रेन मान नहीं रहा था, तो रशिया ने क्या किया, इसके डॉनबास रीजन में, यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में, वहां पे सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि वो यूक्रेन से सेपरेट होना चाहते हैं एंड दे वांट टू बिकम मेंबर ऑफ रशिया, पार्ट ऑफ रशिया, तो उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। सो रिसेंटली 2022 में व्हाट हैपेंड, एक तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट यूक्रेन, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट, और वो जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है, तो रशिया ने रिकग्नाइज किया वो। फर्दर
यूक्रेन, नाटो वाज ट्राइंग टू एनक्रोच यूक्रेन, तो यूक्रेन पर प्रेशर डालने के लिए व्हाट रशिया डिड, रशिया ने वॉर कर दिया. देन रिसेंटली व्हाट हैपेंड, yesterday itself UNSC resolution was conducted कि whether we should take action against Russia or not, but रशिया ने veto power use करके what it did, resolution was not passed. तो ये basically scenario है जो आज के टाइम पे. Okay, so now तो अगर हम डिटेल में अगर देखें causes behind all this, so causes क्या थे basically, geopolitical, geoeconomics and other causes. तो geopolitical क्या है, नाटो एक्सपैंड कर रहा है रशिया के बैकयार्ड में. हमने यहाँ देखा ये सारे ग्रीन नेशंस क्या है, all these green nations have become the part of NATO post 1990. पहले 16 मेंबर्स थे, अब 30 मेंबर्स हो गए. तो अब सिर्फ यूक्रेन रह गए एंड इट इज एक्टिंग एज अ बफर बिटवीन रशिया एंड नाटो मेंबर्स. तो अगर यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बन जाता है तो क्या होगा, नाटो मेंबर्स विल बी स्टैंडिंग एट द डोरस्टेप ऑफ रशिया, सो दे कैन इजीली अटैक रशिया. तो रशिया के बॉर्डर्स पे वेपन्स वगैरह डिप्लॉय कर सकते हैं, लाइक इन दिस रीजन दे कैन डिप्लॉय वेपन्स. So Russia would be in the reach of their weapons. They can easily attack Russia. So they were legitimate security concerns of the Russia. अगर हम देखें, so वो जो बफर था यूक्रेन का वो रिमूव हो जाएगा. देन फर्दर जो इकोनॉमिक्स हमने देखा, जो इकोनॉमिक्स के इट नीड, रशिया वांट्स टू गेन एक्सेस ऑफ ब्लैक सी. तो क्रीमिया का लेजिटिमेट, अगर यूक्रेन पे प्रेशर डालता है तो क्रीमिया उसका लेजिटिमेट पार्ट बन सकता है रशिया का. It will gain access to ports, it will gain access to resources, and also through Black Sea, it will gain access to Mediterranean Sea. So रशिया के इकोनॉमिक पोटेंशियल ओपन हो सकता है. अभी रशिया क्राइसिस में, अभी रशिया की इकोनॉमी क्या है, जस्ट डिपेंडेंट ऑन मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जैसे इंडिया वगैरह नेशंस को बेच रहा है. अब पाकिस्तान भी अप्रोच कर रहा है उसे फॉर वेपन्स. देन ऑल्सो और क्या है, एनर्जी पे डिपेंडेंट है, ऑयल पे. उसके अलावा इट डजंट हैव एनी अदर पोटेंशियल with respect to economic. So through Ukraine crisis and through access to Black Sea, it can explore other options of economic growth. Okay. Then also another reason was EU versus EU. So European Union versus Eurasian Economic Union. तो रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन EU का मेंबर बने, बिकॉज रशिया चाहता है कि वो उसके जो लेड ग्रुप है EU उसका मेंबर बने यूक्रेन. तो another cause is geoeconomics का ही है. Other cause has been, जो रशिया बोलता है, पुतिन की स्टेटमेंट भी आई थी 2 दिन पहले, what he said that यूक्रेन रशिया शेयर familial, linguistic and ethnic relation, हमारे कल्चरल रिलेशन है with Ukraine. So we can't, so losing Ukraine is like losing a member of a family. So we don't want Ukraine being under the influence of West. Then also Ukraine said it is very important to us, and Ukraine has been part of Russia before 1990. So it is using the past imperialism. So basically it is using past imperialism, जो USSR imperialist थी, as the cause of today's expansionism. ये basically try कर रहा है. This is the reason that Putin ने दिया है. Vladimir Putin, Russian president, उसने ये reason दिया basically. He said that Ukraine was the part of a Russia before 1990, तो जो imperialist USSR का था. So we have the full right over Ukraine. So we can expand and capture Ukraine. Clear? तो ये causes था basically. Now let's, what exactly Russia wants. Russia wants कि Ukraine should not become a member of NATO. Ukraine should act as buffer between West and Russia. Then further, US and NATO should reduce its deployments in Central and Eastern Europe. जो Eastern nations है, ये सारी Eastern European nations, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Latvia, Estonia, Lithuania, इनमें presence कम हो NATO की, क्योंकि ये रशिया का former backyard region है. Then Russia wants to maintain its dominance over these regions, जो उसके former USSR members थे. Then also it wants to create new global order, because 1990 के बाद क्या हुआ था, 1990 से पहले कोल्ड वॉर था, तो they were bipolar world, रशिया एंड यूएस पावर थे. 1990 onwards क्या हुआ, यूनिपोलर वर्ल्ड, यूएस डोमिनेंस थे. पर नाउ इन लास्ट डेकेड व्हाट इज हैपनिंग, चेंजिंग ऑफ ग्लोबल ऑर्डर. अब क्या, चाइना इमर्ज हो रहा है, एंड तो रशिया का इतनी इंपॉर्टेंस खत्म होते जा रही है. तो यूएस एंड चाइना आर फाइटिंग ओवर ईच अदर.
और जैसे ट्रेड वॉर हुआ था, लास्ट फ्यू ईयर से ट्रेड वॉर चल रहा है, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है, टी ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इन सब की वजह से रशिया की डोमिनेंस खत्म हो रही है, रशिया कोई पूछ नहीं रहा। जैसे इस बार क्वेश्चन भी था, अगर इफ यू हैव सीन यूपीएससी में, यूपीएससी ने डायरेक्टली बोला कि नाउ यूएस इज फोकसिंग ऑन चाइना टुडे, its focus is more on containing China rather than checking Russia. तो इसके कारण रशिया की डोमिनेंस खत्म हो रही है, तो रशिया वांट्स टू क्रिएट न्यू ग्लोबल ऑर्डर जिसमें रशिया की डोमिनेंस हो. दिस इज द बेसिकली अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ रशिया. Okay, so now let's have a look at what all the implications of all these things would be having across the world. First of all, new Cold War 2.0 is emerging. US and NATO-led bloc versus Russia-China axis is emerging clearly. So this is a Cold War 2.0 is emerging. Then also yesterday itself we saw the failure of multilateral institutions. UN was framed with the objective of ensuring security across the world and prevent world war. But UNSC itself is being misused by the nations. Its members, P5 members, US, Russia, they all are misusing it. Even China are misusing it. They are doing whatever they want, whatever they wish to do across the world. And when UNSC tries to step forward and tries to check the other nation for its rogue actions, what those nations are doing, they are using their veto power. So misuse of veto power is being done. As a result, what is happening? UN is failing to ensure zone of peace. Then if we see security implications, what are security implications? War, there's a tendency of war being spilling over across the world. It might be possible that if NATO deploys its forces in Ukraine, then there might be a direct confrontation between NATO forces and Russian forces, and it may lead to world war, because slowly other nations will also start supporting either NATO or Russian nations. And also what would happen, since now there's rising threat from other nations because they're using hard power to gain influence over the other nations. So now nations will start moving after arms race. Like recently there was exit from START treaty by Russia, so there is a threat of nuclear proliferation. And also NATO is deploying weapons near Russia. And also security wise, if we see, new modes of threats are being emerging, cyber security allegations being made by US and Russia against each other. Then space security threats like weaponization of space is being done. Then also if we see geoeconomically what is happening, energy security. As we know, Russia is the major supplier of energy to European nations. Now because of war, Russia will halt the energy supply. So what will happen? Cost of energy will increase. It will lead to energy inflation. And also recently Germany announced that it will halt the construction of Nord Stream 2 pipeline. So across the world, energy crisis is looming across the world. Then also it will affect the economic revival, because energy is very essential for the revival of the economy. If cost of energy increases, economic revival would get affected. So these are the implications. And also what would happen now? Global supply chain would get disrupted. So it will further affect the economic relations, economic revival. We have already reeling under economic crisis because of COVID. Now this is another dimension that will affect our economy. It will become very difficult for us to achieve our sustainable development goal, inclusive growth, to provide basic requirements of life to our poor. So these are the challenges that are emerging. So it has a lot of implication across the world. So as the what world needs to do, first of all, there was a Minsk process which was initiated in 2014. Its aim was to ensure ceasefire to deal with the separatist movement that was occurring in the Donbas region. But now, since Donbas region has declared itself as independent and recognized by Russia, so Minsk process is no more valid now. So now what needs to be done? First of all, we need to strengthen our United Nations. So we need to bring reform at UNSC. Then UN-led mediation needs to be done in case of war, not individual countries-led. Then moreover, nations should stand together and show cooperation and unity amongst each other, and they should stand against Russia. And also
it's time for the nations to move away from the less effective tools like economic sanctions. जैसे अभी यूएस अनाउंस कर रहा है, then European nations they're announcing economic sanctions की उसके assets freeze कर दो, then एनर्जी सप्लाई वो कर दो, स्टॉप कर दो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हमने पास्ट में देखा है, आप अगर आपने देखा होगा इकोनॉमिक सैंक्शन से क्या हो रहा है, हमने नॉर्थ कोरिया, रशिया पे भी लगाया था 2014 में, इवन म्यांमार में मिलिट्री जनता गवर्नमेंट है, तो क्या हो रहा है, इन पे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर एक कंट्री अगर सैंक्शन लगाती है, दूसरी कंट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ सच क्राइसिस, दूसरी कंट्री सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे इन नेशंस को चाइना सपोर्ट कर रहा है। सो दीज आर द इश्यूज दैट आर इमर्जिंग. So we need to move away from such less effective steps. Okay. Then also we need to evacuate. What needs to be done? NATO needs to step backwards. They need to stop deploying armed forces in Ukraine and in the backyard region of Russia. अगर वो step back करेगा तो Russia भी step back करेगा. And after stepping back, all the nations should resolve their issues through diplomatic channels rather than through war. पर NATO forces को जो stealthily पास्ट में डिप्लॉय करे थे फोर्सेस को, उन्हें स्टेप बैक लेना पड़ेगा, तभी जाके रिजॉल्व होएगा इश्यूज. अदरवाइज दिस इश्यूज विल लिंगर ऑन एंड रशिया विल गेट अ रीजन टू स्ट्राइक एट यूक्रेन. एंड अगर यूक्रेन पे कर रहा है, फ्यूचर में जाके ये बाकी नेशंस पे, लिथुआनिया, रोमानिया, इन पे भी अटैक कर सकता है. सो टू चेक Russia, we really need to take some steps, and these are the legitimate concerns of Russia. We shouldn't ignore it. We shouldn't observe it from black and white picture. रशिया का लेजिटिमेट है कि उसके बैकयार्ड पे अगर जाके फोर्सेस डिप्लॉय करे तो ऑब्वियसली हर नेशन रिएक्ट करेगी. इवन हम भी रिएक्ट करे, जैसे इंडिया चाइना केस में, चाइना गैल्वन वैली में आ रहा है तो हम भी आर्म्ड फोर्सेस को लेके जा रहे हैं. This is the natural tendency of a nation to protect. Everyone wants to protect their sovereignty and territorial integrity. So what needs to be done? Russia should step back. Even NATO forces should step back, and Ukraine, through its referendum, it should, through popular voting, should decide whether it wants to join NATO or want to be with Russia, or just want to act as a neutral state. Baki, let's see what would happen in the coming days. But I hope this crisis is solved as soon as possible. Okay. I hope this session was helpful to all of you. And now you must have got the comprehensive view of this whole situation. Okay. And I request you all to like, share, and subscribe the channel for more such quality content in future, and let others also be made aware of such videos and they can also learn. And also in the next sequel of this video, I will be discussing about our last aspect of this issue, response of India and implications on India. Okay, thank you so much.